नमः। ओम अक्षमालधाराय नमः। ओम महते नमः। ओम त्रयीमूर्तये नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम नागराजैरलंकृताय नमः। ओम शांतरूप महाजनने ज्ञानिने नमः। ओम सर्वलोकविभूषणाय नमः। ओम अर्धनादीश्वराय नमः। ओम देवाय नमः। ओम मुनिसेव्याय नमः। ओम सुरोत्तमाय नमः। ओम व्याख्यान देवाय नमः। ओम भगवते नमः। ओम रविचंद्राग्निलोचनाय नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महानंद पारयानाय नमः। ओम जटधारिणे नमः। ओम महायोगिने नमः। ओम ज्ञानमालैर्लंकृताय नमः। ओम व्योमगंगाजला स्थानाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम यठये नमः। ओम ऊर्जिताय नमः। ओम तत्त्वमूर्तये नमः। ओम महायोगिने नमः। ओम महासारस्वतप्रदाय नमः। ओम व्योममूर्तये नमः। ओम भक्तानामीष्टाय नमः। ओम कामफलदा कामफलप्रदाय नमः। ओम परमूर्तये नमः। ओम चित्स्वरूपिणे नमः। ओम तेजोमूर्तये नमः। ओम अनामयाय नमः। ओम तत्त्वज्ञाय नमः। ओम चतुष्षष्टिकलानिधये नमः। ओम भवरोगभय ध्वंसिने नमः। ओम भक्तनामभयप्रदाय नमः। ओम नीलग्रीवाय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम गजचर्मणे नमः। ओम गतिप्रदाय नमः। ओम आरगिन्ये नमः। ओम कामदयाय नमः। ओम तपस्विने नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। ओम सन्यासिने नमः। ओम गृहस्थश्रमकारणाय नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम समवतां श्रेष्ठाय नमः। ओम सत्यस्वरूपाय नमः। ओम दयापराय नमः। ओम योगपथभिरामाय नमः। ओम वीणाधारिणे नमः। ओम विचेतनाय नमः। ओम मटिप्रज्ञसुधारिणे नमः। ओम पुस्तकधारणाय नमः। ओम वेतालिधि पिसा चौक रक्षशौघ विनाशनाय नमः। ओम रोगाणां विनिहन्त्रे नमः। ओम सुरेश्वराय नमः। इति श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णम्।
अतद्धूपः ॐ अघोरेभ्योऽघोरेभ्योद्घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुरुद्रूपेभ्यः ॐ श्री दक्षिणामूर्तिस्वामिये नमो नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्दमनुषाय नमः धूपं घ्रायामि अतद्दीपः ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदोपग्निर्निरतिं मम पशोगिश्चमक्यमाहवजीवनं च दिशो दिश मानो हि गुंसेर्जातवेदो गामश्वं वरुहिं जगते अभिभृतग्न आगेश्रियामा परिवातय श्री आदिगुरुदक्षिणामूर्ते नमो नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्दपरमशिवाय नमः एकाहातिदीपं सन्दर्शयामि अत नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्री आदिगुरुदक्षिणामूर्ते नमो नमः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्दपरमशिवाय नमः अमृतमहानैवेद्यं निवेदयामि कर्पूरनीराजनम् ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा निपति ब्रह्मणो निपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ सद्यो जातं प्रपत्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनान्यतमेव स्वमां भवोद्भवाय नमः ॐ श्री आदिगुरुदक्षिणामूर्ते नमो नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्दपरमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om Nityananda
Shivoham. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om Nityananda Paramashivoham.
When we say Dakshinamurti teaches in silence, it is not that he never utters a word, but just by a word, he will transmit petabytes of information. He sat as Dakshinamurti in his formless space. His very presence vibrated and all the rishis received that great truths. Dakshinamurtaye vidmahe jnanahastaya dhimahi tanno dhisha prachodayat. 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 I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां ब्रह्म रोमो यस्यां किञ्चन ममते याते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तयानो मृजीवसे इमागं रुद्राय तवसे गमर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामिहे मतिम् यथा नः समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टङ्गरामे अस्मिन्नरात्वरम् मृणानो रुद्रोदरो मयस्कृतिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छं च योऽस्त्यमनुरायते पिता तदस्य पदवरुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्वगं मानो ओक्षन् तमुतमानो ओक्षितम् मानो वदी पितरं मोदमातरप्रियामानस्तनवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतर एवान आयुषिमानो घोषमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रमामितो वदीररिष्वन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उतमोरुषग्ने क्षयद्वीराय सप्तमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अदितिदेव ब्रूह्यता च नः सर्व यच्छद्विपर्वाः स्तोष्ठितं कर्तसदैवाणं रणङ्गमीमपवहन्तमुग्रम् वडा च वृद्रे विद्यस्समानो अन्यन्ते अस्मिन्निव बन्धुसेनाः
तनुष्वमीड्यस्तोकाय तनयाय मृडय मीमुष्टिमशिवतनम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिम्बसानः चरपिनाकं बिभ्रदागैः विकिलितविशोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकुम्भेतयोन्यमस्मन्निव बन्धुताः सहस्राणि सहस्रजा वा भवोत्सवहेतयः ताशामीशानो भगवत्पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो हे रुद्र अधिभूम्या तेषाकुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवा शिटिगण्डाः सर्वा अदाक्षमाचराः नीलग्रीवा शिटिगण्डा दिवगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवो विलोहिताः ये भूतानां मदिपतयो विशिखासर्गवर्धिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनाने ये पदाम्बति रक्षय ऐलमृडाय व्युदः ये तीर्थानि प्रसरन्त्रशिखावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागुंस्तस्य विशो रुद्रावितस्थिरे तेषां सहस्रयोजने विदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये तर्क्षे ये दिव्येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्ते व्योदश प्राचीदश दक्षिणादश प्रतीर्चीदशोर्ध्वास्ते व्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यमिश्चो यश्च रोद इदं भोजं वेददामि त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताते यो रुद्रो अग्नो यो अप्सयो ओषधीशयो रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमोस्तिह्यश्विर्वारुविश्वस्य क्षयितमे सदस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रं नमो बिर्वे वसुवरं धुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे तृष्णवे सजो योगं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्युर्मर्ताय तां यज्ञस्य वा सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरिष रुद्रो वा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने वावभ्यामुतते नमः या तैषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवासरौ या तव तया नो रुद्रमृडय या ते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तापि च कशी यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां गुरमाहिगुं चेः पुरुषं जगते शिवे नवससा त्वा गिरिशाच्चा वदामसि तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तापि च कशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां गुरुमाहिगुं चेः पुरुषं जगते शिवे नवससा त्वा गिरीशाच्चा वदामसि यथा नः सर्वमित्यगति यक्ष्मगुं सुमना असते अद्य ओजति वक्तरा प्रथमो दैव्यो विषके अहीगस्य सर्वाञ्जं वयं सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुणतमपृष्यमङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्रा अमितो दीक्षा सहस्रशो वैशाखं हेडमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहिताः हे भूतानाम् अतिशन्नतृषन्नुदः आर्यः उदयनं गोतानि स दृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वं वयोराज्ञयोज्य याचतेस्तैषमुपराता भवो अवतत्यधरस्त्वगं सहस्राक्षतशेषुदे
मुख शिवो न सुमया भव वेद्यं जनकवर्धिनो विशल्यो वानवागुम्बुत अनेसन्नस्येषवाभुरस्य निसङ्गतिः याते हेतर्मे दुष्टमस्ते बभूव तेदनुः तयास्मान् विश्वस्त्वमेक्ष्मयापरभुज ॐ सद्यो जातं प्रपत्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनानितवे भव स्वमां भवोद्भवाय नमः ॐ वामदेवाय नमो अग्रेष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रवदनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॐ अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वे नमस्ते अस्रद्रवेभ्यः ॐ श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः षोडशोपचार पूजां समर्पयामि। I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om Nityananda Paramashivoham.
परमशिव चतुर्वेद प्रिय चतुर्वेदम् अवधारय ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातामं हरि ओम इषेतोर्जेत्वा वायवस्तोपायवस्तस्य देवो वस्सविता प्रार्पयतु ज्येष्ठतमाय कर्मणे हरि ओम अग्न आयाहि वीतये ज्ञानो हव्यतातये निहोत्सासच्चि परिजिषि हरि ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपोपवन्तु पीजये शंयोरभिश्रवन्तु नः हरि ओम देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव आगमश्लोकप्रिय आगमश्लोकानवधारिक श्रीभगवानुवाच अधिकौतूहलाविष्टा पृच्छश्चेतच्छृणुप्रिये यन्मे नेत्रान्तरे वह्निर्यद्वामृतमनुत्तमं तत्सर्वं कथयिष्यामि योगयुक्त्या शृणुप्रिये यत्स्वरूपम् इदं शुद्धं व्यापकं सर्वतोमुखम् देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव स्तोत्रप्रियस्तोत्रम् अवधारय श्रीकान्तदृगिनोपमन्युतपन स्कन्देन्द्रनत्यादयः प्राचीना पुरवोऽपि यस्य करुणा देशागदाद्गौरवम् तं सर्वादिगुरुं मनोज्ञवपुषं मन्दस्मितालङ्कृतं चिन्मुद्राङ्कितमुद्रपालिनलिनं चित्ते शिवं कुर्महे दुःस्वप्नदुश्शगुनदुर्गदितदुर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसनदुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीतिमसद्गृहाति वागींश्च नाशयतु मे जगदामधीशः ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठिताय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वतत्त्वविधूराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकण्ठाय पार्वतीमनोहराय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्धूलितविग्रहाय महामणिमकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकालरौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारैकनिलयाय तत्त्वातीताय गंगाधराय सर्वदेवादिदेवाय षडाश्रयाय सकलवेदान्तसाराय त्रिवर्गसाधनाय अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय अनन्तवासुकितक्षककारकोटकशङ्खगुलिकपद्ममहापद्मेदि अष्टमः नः कुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाशदिक्स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलङ्करहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय
ಶಶಾಂಕಶೇಖರಾಯ ಶಾಶ್ವತನಿಜಾವಾಸಾಯ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿರ್ಲೋಭಾಯ ನಿರ್ಮದಾಯ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯ ನಿರವಧ್ಯಾಯ ನಿರಂತರಾಯ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ ನಿರಂತಕಾಯ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಿಶ್ಸಂಗಾಯ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಿರಾಗಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯ ನಿರ್ಭಯಾಯ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಿರ್ಭೇದಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯ ನಿಸ್ತುಲಾಯ ನಿಸ್ಸಂಶಯಾಯ ನಿರಂಜನಾಯ ನಿರುಪಮಭಿಭವಾಯ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದ್ವಯಾಯ ಪರಮಶಾಂತಸ್ವರೂಪಾಯ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ತೇಜೋಮಯಾಯ ಜಯ ಜಯ ರುದ್ರ ಮಹಾರೌದ್ರ ಭದ್ರಾವತಾರ ಮಹಾಭೈರವ ಕಾಲಭೈರವ ಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವ ಕಪಾಲಮಾಲಾಧರ ಖಟ್ವಾಂಗ ಖಡ್ಗ ಚರ್ಮ ಪಾಶಾಂಕುಶ ಢಮರು ಶೂಲ ಚಾಪ ಭಾನ ಗದ ಶಕ್ತಿ ಭಿಂದಿಪಾಲ ತೋಮರ ಮುಸಲ ಮುದ್ಗರ ಪಾಶ ಪರಿಗ ಭುಷುಂದಿ ಶತಗ್ನಿ ಶಕ್ರಾದ್ಯಾಯುತ ಭೀಷಣಕರ ಸಹಸ್ರಮುಖದಂಶ್ರಾಕರಾಲವದನ ವಿಕಟಾಟಹಾಸ ವಿಶ್ವಾರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲ ನಾಗೇಂದ್ರಕುಂಡಲ ನಾಹೇಂದ್ರಹಾರ ನಾಹೇಂದ್ರವಲಯ ನಾಹೇಂದ್ರ ಚರ್ಮಧರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವೃಷಭವಾಹನ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವತೋ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಜ್ವಲ ಜ್ವಲ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ಅಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಶೋರಭಯಂ ಉಚ್ಛಾದಯ ಉಚ್ಛಾದಯ ವಿಶೇರ್ಪಭಯಂ ಶಮಯ ಶಮಯ ಶೋರಾನ್ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಮಮ ಶತ್रून् ಉಚ್ಛಾದಯ ಉಚ್ಛಾದಯ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ವಿಧಾರಯ ವಿಧಾರಯ ಕುಠಾರೇನ ಭಿಂದಿ ಭಿಂದಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಖಟ್ವಾಂಗೇನ ವಿಪೋತಯ ವಿಪೋತಯ ಮುಸಲೇನ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ಬಾಣೈ ಸಂತಾಡಯ ಸಂತಾಡಯ ರಕ್ಷಾಂಶಿ ಭೀಷಯ ಭೀಷಯ ಅಶೇಷಭೂತಾನಿ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಮಾರೀಚ ವೇತಾಳ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಗಣಾನ್ಯ ಸಂತ್ರಾಶಯ ಸಂತ್ರಾಶಯ ಮಾಂ ಅಭಯಂ ಕುರು ಕುರು ವಿತ್ತಸ್ತ್ವಂ ಮಾಂ ಆಶ್ವಾಸಯ ಆಶ್ವಾಸಯ ನರಕಮಹಾಭಯಾನ್ ಮಾಂ ಉದ್ಧರ ಉದ್ಧರ ಸಂಜೀವಯ ಸಂಜೀವಯ ಕ್ಷಿತ್ರಿಭ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಆಪ್ಯಾಯಯ ಆಪ್ಯಾಯಯ ದುಃಖಾದುರಂ ಮಾಂ ಆನಂದಯ ಆನಂದಯ ಶಿವಕವಚೇನ ಮಾಂ ಆಚ್ಛಾದಯ ಆಚ್ಛಾದಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಸದಾಶಿವ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರ ಪರಮಶಿವ ದ್ರಾವಿಡ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ದ್ರಾವಿಡ ವೇದಂ ಅವಧಾರಯ ತೋಡುಡಯ செவியன் விடையேறிவொதுவென் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியனுள்ளம் கவர்கல்வன் ஏடுடைய மலரால் முனை நான் பணிந்திட்ட அருள் செய்த பீடுடைய பிரமா புறமேவிய பெம்மானிவனன்றே முற்றல் ஆமை இள நாகமோடு என முளைக்கொம்பு அவை பூண்டு வற்றல் ஓடு கலனா பலிந்தேர்ந்தனதுள்ளம் கவர்கல்வன் கற்றல் கேட்டல் உடையார் பெரியார் கழல் கையால் தொழுதத்த பெற்றம் முர்ந்த பிரமா புறமேவிய பெம்மானிவனன்றே நீர் பரந்த நிமிர்புன் சடை மேலோர் நிலா வெண்மதி சூடி ஏற்பரந்த இனவெல்வனை சோர என்னுள்ளம் கவர்கல்வன் போர் பரந்த உலகின் முதலாகிய ஓரோர் இது என்ன போர் பரந்த பிரமா புறமேவிய பெம்மானிவனன்றே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம்.
की मत करो आओ this side you this way she found Jyoti only I will just catch at you I will watch this You're doing third reading and you know. It's so comedy. Don't look at me, okay? Because I'll start laughing if I see Jyoti. I am very busy Good. Make sure Swaprama also doesn't see my face. That Swaprama was only making me laugh from that time. Shama you have to have that Hmm? she should not have We never need to stand up, right? no So, where will Jyotima come and sit? Okay, where will she come and sit? परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Nityanandam, I welcome all the viewers of today's Shakti Avishkarana for the Uttamottama Seva today. Today we will be manifesting the power of blindfolded reading through the third eye for the Shakti Avishkarana. Here I have Vanshika who will be manifesting the power today. Vanshika will be manifesting the power today, and with her, who will be assisting her in the power today is Ma Jyoti Ma. She'll be helping Vanshika in manifesting the power today. The power of third eye is all about feeling oneness. Actually, all the powers are. So, only when we feel oneness with the paper in front of us, with Sadashiva, we know
God is part of everything. God is omnipresent. So when we know God is part of everything, we know God is even in the paper and even in the pen which is being written, and even in Jyotima who is writing the word. So now we will be writing the. I will just be giving the paper. Before that, I would like to all the powers we do is actually from the scriptures, okay? And from the scriptures only even the truth has come. So today the Shastra Pramana for the third eye reading will be as follows. The Shastra Pramana for third eye reading, vision blindfolded, is from Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 34, Dharana 11. कपालान्तर्मनोनस्य तिष्ठन्मीलिन्तलोचना क्रमेण मनसोदाड्या लक्षयेद्लक्ष्यमुत्तमम् कपालान्तर्मनोनस्य तिष्ठन्मीलिन्तलोचना क्रमेण मनसोदाड्यात् लक्षयेत् लक्ष्यमुत्तमम् कपालान्तर्मनोनस्य तिष्ठन्मीलिन्तलोचना क्रमेण मनसोदाड्या लक्षयेत् लक्ष्यमुत्तमम्. The translation goes as: by fixing the mind on the inner space within the crown center and sitting stably without any movement, having the eyes closed in succession, by that stability of the mind and the inner space through the power of the third eye, one directly sees the ultimate goal, Lakshyam, by having the vision beyond the sight that reveals any object or place, attaining the space of oneness with the source, Sadashiva. So after this, actually all these have many references. All the powers that happen here actually have many references throughout the scriptures. This was the particular reference we have for the third eye power. Now I will give this this board and paper to Ma Jyoti. So before that, I would like her to just test this blindfold and check if it's very foolproof and there's no gaps in it. You can just put it over your eyes, Ma. Can you see anything, Ma? So Ma Jyoti has clarified that it's not visible. Now you can put it on top of Vanshika itself. Vanshika, are you comfortable? Are there any gaps you needed to be adjusted? Okay. So now you can see this notepad. It's completely empty and a marker. I'm going to give these to Jyotima so that she can write a word for Vanshika to read. So as you can see, she's showing that the board is completely clear with no sort of written stuff on it, where it is completely blank, where Vanshika could not have possibly known what Jyotima was about to write previously. Jyotima has finished writing and
she can show it to the camera before giving it to Vanshika. As you can see, Jyotima has written something on the board and will now give it to Vanshika. Now you can give it to Vanshika. Yes. So now as you can listen, Vanshika is chanting the Mahavakya, which is directly the password to get a connection with the cosmos. So as she's chanting the Mahavakya, she's getting a very deep connection with Paramashiva, who is our God, who comes in many, many names. So with that connection, now feeling one with everything around her, feeling as she is part of everything, she is now reading the words on the paper. As you can see, she's actually holding the board a little towards the side, because with the third eye, it's not exactly how you have it, two eyes seeing everything. It is a bit focused at the start before it becomes into a full 360-degree vision. When it's only with two eyes, at that point of when you first start reading with the third eye, you see only in a particular point. Some people cannot see even in the front. I know many kids who have struggled so much with the front, but then the moment you put the board in the back of the head, they just read it so fluently. So at the starting, the third eye has no sense of direction. So right now, if you can see, as you can see, Vanshika's vision point is towards the side, and she's still figuring it out exactly. Actually, a lot of tests have also been done on reading through the third eye, where we have gone to NIMHANS, which is a highly developed neurological hospital kind of a place, research center in Bangalore, where they have clarified over many times using highly advanced scientific equipment, saying that the optic nerve, the nerve which uses the eyes, is not at all in play in this whole thing. It's something else, like the part of a brain is being activated, but the optic nerve, the actual nerve over here, which focuses all the light from your eyes, is not in play at all. It is totally something else which the doctors are not able to comprehend. Go on chanting the Mahavakya, it will help you.
Actually, we have even toured the whole world many times, doing many powers and demonstrating to thousands of people across the world the possibility of this. Swamiji says, I am not here to prove that I am God. I am here to prove that you are God, which is exactly what he's showing now by making us all manifest the powers. We are his Sakshi Pramana. So I had mentioned earlier the Shastra Pramana, which is the scriptural reference, the Shruti, the original scriptures downloaded, which are not just remembered but downloaded and directly put out in words. That is the Shruti, the Vedas and the Upanishads. These are from that. Then there's something called the Smriti, which is remembered by people, which people have written their own experiences. That is called the Apta Pramana, where the own experience of many different enlightened masters has been proven that this power has happened. And then there is the Sakshi Pramana, the Atma Pramana before that, actually. Swamiji's own experience, where when he was sitting on a rock in the sacred hill of Arunachala, where he had a divine experience where he was able to see all the 360-degree dimensions. He was able to feel the oneness with everything around him. The skin of his body was also the same as the skin of his rock. Same as the skin of the rock. With that experience, there's even to the Sakshi Pramana. We are all the Sakshi Pramana, where we are the ones who are able to do it. The ones where we are able to show to the world, we are able to experience it ourselves, where it's not just only something which enlightened masters are talking about, but it's something a reality for us. Then there's the Pratyaksha Pramana, which is all of you viewers. What you guys are witnessing it. It's not the Sakshi Pramana is us experiencing it, but the Pratyaksha Pramana is you guys witnessing this very happening itself. With so many references, it's not possible this all is just fluke or magic. It's all real science, because it's not just in one or two of us. It's every single person who has come to Swamiji has been manifesting some power or the other. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest powers of Mahasada So she's saying that she's not able to pronounce the words, but let her spell out. She's saying that she's be able to spell out the words. So let her go ahead with that. Yes, go ahead. Yes, correct. Go ahead. Yes, you got the first two words right. Go on. You're able to do it. You can make yourself comfortable holding wherever you feel your vision point is, wherever you are seeing it. Okay, she has read the first word, she spelled out the first word. We can show it
do you mind spelling it out again? As SAMY, as his way. Go ahead. Yes, you're getting it right. Just few more. A little bit more. See, a little down. Way to enlightenment. Correct. Yes. Now you can show the board to the camera. See what she has said. She spelled out the first word, and then the last two letters of the first word she said it as a word as, and then she will say is way to enlightenment. She was able to say that out herself. Yes, ma. How did you feel about this? Is she right, and did she do well? How did you feel about this experience? What was your experience of this? Okay. Purna mantra. Thank you for watching today. We offer this at the Divine Feet, Lotus Feet of His Divine Holiness Paramahamsa Nityananda, Sri Nityananda Paramashivam, and we are very thankful for him to give us this opportunity to present this at his feet. Thank you, Nityanandam. आनंद परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम्
The next offering at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Vadya Seva. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Tirukailaya Vadya Priya Tirukailaya Vadya Avadharaya.
The next offering. The next offering at the feet of Sri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Nitya Seva. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Sri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityanandeshwara Paramashiva Nitya Priya Nityam Avadharaya. नव यौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि 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 Shwar
द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Sangita Seva. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Sangita Priya Sangitam Avadharaya. नन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. This is louder, yeah. I need a louder mic. हमारे मन मंदिर में गुरु हमारे प्राण गुरु हमारे मन मंदिर में गुरु हमारे प्राण सारे विश्व का हो है दादा नित्यानंद भगवान सारे विश्व का वो है दाता नित्यानंद भगवान गुरु हमारे मन मंदिर में गुरु हमारे प्राण गुरु हमारे मन मंदिर में गुरु हमारे प्राण सारे विश्व का वो है दाता नित्यानंद भगवान
सारे विश्व का वो है दाता नित्यानंद भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे तन मन सब है गुरु हमारे प्यार। गुरु हमारे तन मन सब है गुरु हमारे प्यार। ज्ञान भक्ति का वो है दाता नित्यानंद भगवान। ज्ञान भक्ति का वो है दाता नित्यानंद भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। 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 गुरु हमारे धन दौलत है गुरु हमारे प्राण। गुरु हमारे धन दौलत है गुरु हमारे प्राण। भक्ति मुक्ति का वो है दाता नित्यानंद भगवान। भक्ति मुक्ति का वो है दाता नित्यानंद भगवान। गुरु हमारे धन दौलत है गुरु हमारे प्राण। गुरु हमारे धन दौलत है गुरु हमारे प्राण। भक्ति मुक्ति का वो है दाता नित्यानंद भगवान। भक्ति मुक्ति का वो है दाता नित्यानंद भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। 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 ओम गुरुदेव जय गुरुदेव।